आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है स्पाइना बाइफिडा, पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी। ये इसकी अपीयरेंस हो गई स्पाइनल प्रोट्रूजन। स्पाइना बाइफिडा इज द सेकंड मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी। जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी है वो सीपी है, सेरिब्रल पाल्सी, कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर दैट हैज़ फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। स्पाइना बाइफिडा इनफैक्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से ही होता है। फर्दर हम इसकी टाइप्स भी देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स और इसका ट्रीटमेंट। कंसिक्वेंस ऑफ द न्यूरल ट्यूब क्लोजर, फेल्यूर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। Folic acid fortification can alter a woman's risk of an neural tube defect birth from 50 to 70%. Reasons: eating habits, supplements taking practices, general awareness of how nutrition affects pregnancy, difference in social structure. Risk factors: maternal obesity, nutrient intake, supplement use. ये वही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है एट डे 14, 15 एंड 16। हम देख सकते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, कट एज ऑफ द एमनियन, कॉर्डल एंड है और इसके अपोजिट क्रेनियल एंड हो गया। येलो कलर ये यॉक सैक, कट एज हो गया, एपीब्लास्ट हो गई और इससे बाहर अंदर पड़ी हुई हाइपोब्लास्ट हो गई। इसी के अगर हम सेक्शन में तो इसमें प्रिमिटिव स्ट्रीक होगी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट ऊपर वाली लेयर और हाइपो जो नीचे वाली लेयर है। और डे 16 पे हमें ये 3 लेयर्स नज़र आती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। फर्दर इन्हीं 3 लेयर से हमारे बाकी सिस्टम डेवलप होते हैं। ये वही लेयर्स होगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, न्यूरल ट्यूब, ये न्यूरल प्लेट बॉर्डर हो गया, नॉन न्यूरल एक्टोडर्म। ये हमारे पास होगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। AAP, अमेरिकन फॉर द फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द पेडियाट्रिक गाइडलाइंस फॉर फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन क्या है? ऑल वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज शुड टेक 400 माइक्रोग्राम और 0.4 मिलीग्राम पर डे। वुमेन विद प्रीवियस NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, प्रेगनेंसी, इनमें डोज ज़्यादा हो जाती है, ऑलमोस्ट 4000 माइक्रोग्राम्स या फिर 4 मिलीग्राम पर डे, 1 month prior to conception and through the first trimester. High risk pregnancy such as mother who is taking valproic acid or has maternal diabetes, तो इसमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है फोलिक एसिड की 4 मिलीग्राम पर डे। पैथोलॉजी देखेंगे, एक्टोडर्म, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, डेवलप अ रिज दैट इवेंचुअली बिकम्स न्यूरल ट्यूब. This neural tube forms spinal cord, brain and meninges. Spina bifida occur when a portion of neural tube fail to close properly. This lead to defect or absence of vertebral arteries to do failure of mesoderm to organize the defect. Mechanism of neural tube closure: interaction, various glycoprotein and cell adhesions, molecules, multiple roles for various signaling protein and receptor interaction, interlinking of numerous cell phylopodia and formation of intracellular junction. Neural tube induction involve numerous soluble diffusible factors produced by a variety of genes, sonic, hedgehog, specific cell surfacing signaling molecules important for appropriate migration of cells within the developing neural tube and direct cell signaling. टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा की ये टाइप्स होगी हमारे पास, ओकल्टा, मेनिंजोसील एंड माइलोमेनिंजोसील। बेसिकली स्पाइना बाइफिडा की 2 टाइप्स होती हैं, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा एंड स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में फर्दर फिर हमारे पास आ जाते हैं मेनिंजोसील एंड माइलोमेनिंजोसील। इन तीनों में अब हम डिफरेंस देखेंगे। सिस्टिका तो क्लियर है ना कि उसमें कैविटी फॉर्मेशन होती है और कैविटी हमें इन दोनों में ही मिलती है, मेनिंजोसील में भी और माइलोमेनिंजोसील में भी। Spina bifida occulta क्या है? Spina bifida occulta is the least serious and most common type. It is usually discovered only on X-ray or the scans. Most people never become aware of their condition. अब हम देखेंगे स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका की फर्स्ट टाइप मेनिंजोसील इज द नेक्स्ट मोस्ट सीरियस टाइप। मेनिंजोसील, मेनिंजस से कवरिंग से ही है। कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कार्ड पास बैक थ्रू द ओपनिंग इन स्पाइन टू फॉर्म अ सिस्ट लाइक स्वेलिंग। माइलोमेनिंजोसील में क्या होता है? मेम्ब्रेन्स के साथ साथ स्पाइनल कार्ड भी सिस्ट में चली जाती हैं, पाउच आउट कर जाएगी डिफेक्ट के जहाँ पे होगा। इफ द स्पाइनल कार्ड इज इनक्लोज्ड इन द सिस्ट, द कंडीशन इज कॉल्ड माइलोमेनिंजोसील. दिस इज द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा. ये इसकी प्रेजेंटेशन होगी। अच्छा, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं स्पाइना बाइफिडा की प्रेजेंटेशन। ये फिजिकल प्रेजेंटेशन हो गई। फर्दर अगर हम देखें तो जहाँ पे बोन डिफेक्ट है वहाँ पे हमें ईयर टफ्ट मिलता है। ये तो हो गया ओकल्टा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ पिक्चर जो है वो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका की है। और इसमें जो फर्स्ट पिक्चर है सिस्टिका में, जिसमें स्पाइनल फ्लूइड हमें नज़र आ रहा है, तो इसमें हम देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मेनिंजेस जो है वो सिस्ट में है, स्पाइनल कार्ड नहीं है।
लेकिन जो लास्ट है ये हमारे पास माइलोमेनिंजोसील है, जिसमें हमें मेनिंजेस भी नज़र आ रही हैं तीनों, और साथ स्पाइनल कार्ड भी ग्रीन कलर का। अदर थ्योरीज रिलेटेड टू दी एसपी spina bifida, अच्छा इसमें डाइज एंड कोलीग्स myelomeningocele, failure of the Hansen's node to lay down the notochord correctly, failure in the gastrulation, error in induction of neural tube. The cranial end of the primitive tree form a thickening known variously as the primitive knot. The primitive node are the Hansen node. The primitive pit forms immediately posterior to the node, and the cells from the epiblast migrate here, invaginate, then form intraembryonic endoderm and mesoderm. Failure of the induction of neural tube, incomplete central nervous system development या overgrowth CNS. ये हमारे पास फ्लो चार्ट आ गया, जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट, वर्टिब्रल डिसजेनेसिस जो कि लीड करता है स्पाइना बाइफिडा को, या फिर पोस्टीरियर फोसा हाइपोप्लेजिया, चेरी मेलफॉर्मेशन है, सीएसएफ ऑब्स्ट्रक्शन इन दी पोस्टीरियर फोसा एंड फोरामन मैग्नम, रेज्ड स्पाइनल प्रेशर, ये भी लीड कर सकता है स्पाइना बाइफिडा को, या फिर रेज्ड क्रेनियल प्रेशर, ये भी चीज़ जो रेज्ड क्रेनियल प्रेशर है तो हाइड्रोसेफलस डेवलप होगा। अच्छा, इसी में हम देख सकते हैं ये क्रेनियल डिसजेनेसिस है जो कि लीड करता है एन इंसेफेलिको। जेनेटिक इन्फ्लुएंस देखेंगे स्पाइना बाइफिडा में, अल्टरेशंस इन दी जीन अफेक्ट मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, सेल प्रोग्रामिंग, सेल सिग्नलिंग, आर इफेक्ट एस्पेक्ट ऑफ न्यूरल डेवलपमेंट ranging from signaling aspect of induction of neural tube formation initiated by the notochord to alterations in programmed cell death. This affect overall CNS development. Sonic hedgehog, जिसे SHH भी कहते हैं, vertebrate genes expressed by cells in notochord that is conjunction with patch gene produce protein that are involved in induction of floor plate during the embryogenesis. The proliferation of the neural subtypes such as motor neurons and beginning of somatic development. PTC serves as a negative feedback to sonic hedgehog. Failure of this system or feedback, overexpression of one portion of the process could be easily involved in neural tube development failure. Gene association associated with folate metabolism. Folate serves as cofactor for enzymes that participate in nucleotide synthesis. Disturbance in the metabolic pathway that utilized folate may predispose to NTDs. Corrected by the folate supplements, elevated homocysteine level in pregnant women is risk factor for the NTDs. Enzyme mutation, enzyme 510 methylene tetrafolate reductase, diminished plasma folate level, elevate homocysteine levels. This alteration is identified in spina bifida as well as their mothers and fathers. Environmental influence, hyperthermia during early pregnancy, first 28 days, parental occupation, nutritional influence, zinc and folate, prior history of such defect, maternal obesity, teratogenic influence, valproic acid that is used for seizures, highly active antiviral therapy, आइसोट्रेटिनोइन एक्ने के लिए और ये सोरियासिस के लिए, या फिर अल्कोहल कंजम्पशन। प्री नेटल स्क्रीनिंग, ब्लड टेस्ट, क्वार्ट स्क्रीनिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, अल्फा फीटो प्रोटीन्स AFP, अल्ट्रासाउंड जिसमें हम देखेंगे लेमन या बनाना साइन, लेमन शेप ऑफ हेड और बनाना, हर्निएशन ऑफ सेरिबेलर वर्मिस थ्रू द फोरामन मैग्नम। ये हमारे पास हो गया ऑब्स्टेट्रिक इमेजिंग, लेमन साइन एट द लेवल ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, देयर इज स्कैल्पिंग ऑफ द पेरेंटल बोन्स। ये बनाना साइन हो गया। The cerebellum, as it herniates through the foramen magnum, takes up the shape of the banana. When both the lemon and banana signs are seen together, an open spinal defect is present. लेमन साइन लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे बनाना साइन, जो कि हमें दोनों पॉजिटिव मिलते हैं स्पाइना बाइफिडा में। अच्छा, ये है हमारे पास AFP एट 20 वीक gestation, a maternal serum AFP concentration higher than 1000 nanogram per ml would be indicative of an open neural tube defect. Spina bifida occulta, bony defect with no herniation of meninges or nervous elements, जैसे हमने पीछे पिक्चर में भी देखा था, सिर्फ बोनी डिफेक्ट होता है, कोई meninges उसमें पाउच आउट नहीं करी होती, कोई स्पाइना कार्ड पाउच आउट नहीं करता।
Incidental finding in 5% to 36% of adults, a small percent can develop clinical findings. Spina bifida occulta can be associated with pigmented nevus, angioma, hairy patch, dimple, and dermite sinus, usually found in the lumbosacral या फिर sacral segment, can have associated tethered guard with development, may have bowel and bladder involvement, no hydrocephalus artery malformation. Spina bifida cystica second type, bony defect with herniation of the spinal canal elements. फर्दर इसकी दो टाइप्स हमने देखी थी, meningocele और myelomeningocele. Meningocele herniation of the meninges but does not contain neural tissues. Usually normal neurological exam, no association with hydrocephalus or the cherry malformation. Uncommon, occur less than 10%. Meningomyelocele, herniation of meninges and neural elements, most common, associated with hydrocephalus and cherry type 2 malformation, abnormal motor and sensory exam, neurogenic bowel and bladder, 75% in the lumbosacral segment. ये तीनों का डिफरेंस हो गया हमारे पास स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका. फिर उसकी हमने टाइप्स देखे हैं सिस्टिका की, मेनिंजोसेल एंड माइलोमेनिंजोसेल. कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम, ये क्या है हमारे पास? एब्सेंस ऑफ सैक्रम एंड द पोर्शन ऑफ द लंबर स्पाइन एसोसिएटेड विद maternal diabetes. Associated findings include syringomyelia, anorectal stenosis, renal abnormalities, external genital abnormalities and cardiac problems. मोटर एंड सेंसरी एबनॉर्मेलिटीज़ भी हमें मिलती हैं कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम में. क्लिनिकल साइंस और इसका कोर्स देखेंगे. In the care of spina bifida patients, two levels are often described: the anatomic level of the lesion and neurologic level of functional involvement. In terms of the level, it is neurologic or the functional level that gives healthcare providers prognostic information with respect to long-term expectations and functional outcomes. Spinal cord involvement may result in asymmetric motor and sensory deficit. Sensory deficit usually follow dermatomal pattern and may not affect all sensory modalities equally. Neurogenic bladder and bowel dysfunction may be present in all patients because of the distal level of innervation of the bladder and bowel. This is true even if there is no apparent motor involvement or deficit in the legs. Musculoskeletal deformities related to muscle imbalance may present serious clinical concerns. Deformities may be static deformities present at the birth or may develop over the years. Thoracic lesions. Thoracic level malformations spear the upper extremities with exception of decreased ability to abduct the fifth digit, क्योंकि उसकी सप्लाई T1 से होती है, बाकी सारी मूवमेंट्स ठीक होंगी. There is usually partial innervation of abdominal and intercostal musculature which may result in respiratory dysfunction or insufficiency. Kyphosis and kyphoscoliosis may result from trunk weakness and can be more prominent in individuals with vertebral anomalies. The lack of volitional movement combined with the effect of gravity lead to lower extremity deformities. The usual lower extremity posture and spine position is partial hip external rotation, abduction, and ankle plantar flexion. Deformities develop from sitting hip flexion, knee flexion, and equinus. Hip flexion contractures with compensatory lumbar lordosis increase any pre-existing kyphosis or kyphoscoliosis. नेक्स्ट हम देखेंगे L1 to L3 segment. Hip flexors and hip adductors are innervated at the L1, L2 levels, with L2 sparing. Knee extensors have partial innervation but are not at full strength. Distal lower extremity muscle strength is absent. The distribution of the muscle imbalance, hip flexion and hip adduction, with absent hip extension and hip abduction, leads to the development of contractures and early paralytic hip dislocation. Pelvic obliquity seen in asymmetric hip pathology enhances scoliosis. Gravity-related foot equinus deformity may develop. इक्वाइनस डिफॉर्मिटी हमारे पास होती है कि फुट जो है वो प्लांटर फ्लेक्शन में चला जाता है. एम्बुलेशन ड्यूरिंग यंग चाइल्डहुड इज टिपिकल विद द यूज ऑफ ब्रेसिंग एंड असिस्टिव डिवाइसेस. जब भी L1 से L3 तक इन्वॉल्वमेंट होगी तो अर्ली चाइल्डहुड में ही बच्चा अनएबल होगा, वो ठीक से चल नहीं सकेगा, वो एम्बुलेशन के लिए ब्रेसिस यूज़ करेगा, असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करेगा.
Long-term ambulation through the adulthood is less likely as priorities change and there are further increase in already high energy demand of walking. The extent of racing necessary to achieve ambulation is usually related to the amount of एक्टिव नी एक्सटेंशन। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर इससे थोड़ा सा नीचे लेवल इन्वॉल्व है L4 से L5 सेगमेंट। इनर्वेशन ऑफ हिप फ्लेक्सर्स, हिप एडक्टर्स एंड नी एक्सटेंसर्स आर यूजुअली कंप्लीट। However, hip abductors and hip extensors remain weakened. Coxa valga and acetabular dysplasia are still a concern. Typically, hip dislocation occurs later at the L4, L5 segmental levels. Newborn with a well-defined lesion sparing L4 lie in a typical position of hip flexion, hip adduction, and knee extension. When the L5 segment is spared, the gluteus medius, gluteus maximus, and hamstrings have partial strength, and knee extensor contracture is less likely because the tibialis anterior is unopposed by its plantar flexion and everter antagonists. A calcaneovarus foot deformity develops. If the peroneus muscles are spared, the varus is eliminated. Although the plantar flexors are partially innervated, they are not strong enough to counter these strong forces. Sacral segment involvement. Active plantar flexion is present and some toe movements are present. Intrinsic foot muscles remain weak and may result in a cavus foot deformity with clawing of the toes. Sensory deficit, partial or the complete absence, skin injuries, decreased ability to perceive pressure, trauma or heat. स्किन ब्रेकडाउन प्रोमिनेंस एरिया में होगी या फिर वेट बेयरिंग एरिया में स्किन ब्रेकडाउन। लोअर बैक इन्वॉल्वमेंट होगी, इंटरग्लूटियल रीजन इन्वॉल्व होगा, पेरिनियल रीजन, फीट, हील, टो, स्कोलियोटिक या फिर काइफोटिक प्रोमिनेंस मिलेगी। प्रेशर अल्सर्स हील्स स्लोली, इन्फेक्टेड एंड रिकर। लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सरेशन कन्वर्टेड टू दी ओस्टियोमाइटिस। ऑफकोर्स जब अल्सर सील नहीं होंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे, बार बार होंगे तो वो डीपली पेनिट्रेट कर जाते हैं और इवन बोन्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, तो इस स्टेज पे फिर हम कहेंगे ओस्टियोमाइटिस जब बोन इन्वॉल्व होंगी। अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिनर्वेशंस, मोटर इंस्टेबिलिटी, न्यूरोपैथिक चारकोट जॉइंट्स जिसमें स्मॉल जॉइंट्स फुट के अंदर जो स्मॉल जॉइंट्स है वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं, जैसे हम डायबिटिक फुट में देखते हैं चारकोट फुट डिफॉर्मिटी हमें मिल रही होती है। और जो मीडियल आर्च होती है ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बल्कि उनके रॉकर फुट जो हैं वो बन जाते हैं। ओस्टियोपोरोसिस एंड वीकनेस, रिहेबिलिटेशन देखेंगे। Rehabilitation, the role of rehabilitation specialist with neural tube defect is specifically to understand the complex nature of this group of disorders and apply sound principle in finding a plan. The plan will change based on the level of lesion, the developmental age of the individual, family resources, and community resources. This plan should be family centered and include all pertinent disciplines. Level of lesion and skull. अगर तो T12 एंड above है तो फिर delayed but can be achieved by compensatory means at around 18 months. रोलिंग ओवर हम कर सकते हैं अचीव। अगर तो L1 L2 सेगमेंट इन्वॉल्व है तो फिर रोलिंग ओवर इसमें भी डिलेड होगी बट कैन बी अचीव बाय कंपनसेटरी मेथड्स। और अगर इससे भी नीचे है लेवल L3 L4 इन्वॉल्वमेंट है, रोलिंग ओवर डिफ़िकल्ट होगी, डिले होगी। और अगर L5 इन्वॉल्व है या फिर सैक्रल सेगमेंट इन्वॉल्व है तो मिनिमल डिले होगा रोलिंग ओवर में। नेक्स्ट हम देखेंगे सीटिंग। सीटिंग अगर तो T12 या फिर एबव लेवल है तो सीटिंग डिले होगी बट कैन सिट विद प्रॉपिंग एंड इक्विपमेंट। L1 L2 लेवल वाले की सीटिंग कैसी होगी, डिले बट कैन अचीव सीटिंग, मे हैव सम बैलेंस इश्यूज। L3 L4 लेवल में डिलेड बट एबल टू सिट। और L5 या फिर सेवरल इन्वॉल्वमेंट अगर है तो मिनिमल डिले होगा सीटिंग में। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोर मोबिलिटी कैसी है। अगर तो T12 या एबव इन्वॉल्वमेंट है तो रोलिंग, कम्बैट क्रॉलिंग और बॉटम स्कूटिंग होगी। L1 L2 पे रोलिंग है, कम्बैट क्रॉलिंग है और बॉटम स्कूटिंग। और L3 L4 पे हमें मॉडिफाइड क्रॉलिंग मिलेगी। L5 या फिर इससे नीचे अगर लेवल है इन्वॉल्व तो फिर क्रॉलिंग। एम्बुलेशन देखेंगे T12 या फिर एबव विद एडेप्टेड इक्विपमेंट, आर्थोटिक्स, पुअर प्रोबेबिलिटी ऑफ द एम्बुलेशन, जिसमें वो डिफरेंट आर्थोसिस यूज़ कर रहा होगा जैसे HKFO, KAFO, RGO, डायनामिक एंड स्टैटिक स्टैंडर्ड। और अगर L1 L2 की इन्वॉल्वमेंट है तो उनकी एम्बुलेशन कैसी होगी, ये भी एडाप्टेड इक्विपमेंट यूज़ कर रहा होगा,
टेक डिवाइसेस यूज़ कर रहा होगा, हाउस होल्ड एम्बुलेशन होगी, KFO या फिर RGO डायनामिक स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हुए एम्बुलेट करेगा पेशेंट। इसी तरह L3 L4 में हम देखेंगे विद आर्थोटिक्स, हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी एम्बुलेशन, KFO फ्लो रिएक्शन, KFO AFO वर्कर्स एंड क्रचेस। लेकिन अगर L5 या फिर इससे नीचे कोई भी लेवल इन्वॉल्व है तो उनकी एम्बुलेशन कम्युनिटी एम्बुलेशन होगी, साथ वो AFO यूज़ कर सकता है या फिर UCB सॉरी। इसके बाद हम देखेंगे मस्कुलोस्केलेटल इन्वॉल्वमेंट, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑफ पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटीज begins in newborn and should continue as part of daily care. Thereafter, passive range of motion exercises is applied to all joints below the level of paralysis, with special emphasis on the joints with evident muscle imbalance. The infant should not lie constantly in one position but should be moved and turned frequently. This practice must be taught to parents and not only to mitigate contractures, including those related to gravity, but also to avoid breakdown of anesthetic skin. For the same reason, support must be used with great precautions, removed frequently to check for skin irritation, and adjusted or discontinued if such problem occurs. Passive range of motions and splints are advisable after surgical contraction of deformities to maintain joint mobility gained by the procedure. Strengthening exercises are sometimes beneficial for partially innervated muscles or after surgical muscle transfer for improving strength or function. गेट पैटर्न, पेंडुलम पर वीक हिप एबडक्टर्स की वजह से स्टेपिश गेट ड्यू टू वीक डोर्सीफ्लेक्सर्स, क्राउच पैटर्न मिल सकता है, क्राउच पैटर्न में फ्लेक्स्ड नी गेट मिलती है। ग्रोथ स्पर्ट होगा व्हेन मसल्स कांट कीप अप विद रैपिडली इंक्रीजिंग वेट, फिजिकल डिफॉर्मिटीज, वेट गेन, मसल वीकनेस, पुअर मोटर कंट्रोल एंड कॉन्ट्रैक्चर्स। इसमें हम देख सकते हैं क्राउच गेट, हिप फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन, एंकल डोर्सीफ्लेक्शन, और राइट साइड पे हमें स्टेपिच गेट नज़र आ रही। इसमें इनएबिलिटी टू लिफ्ट द टोज ऑफ द ग्राउंड। ये हमारे पास ट्रेंडेलनबर्ग गेज है, इसमें हम देख सकते हैं वीक हिप एबडक्टर्स, ग्लूटियस मीडियस की वीकनेस। न्यूरोजेनिक बाउल डिसफंक्शन, द कोलन, रेक्टम एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमिक नर्व्स। पैरासिम्पैथेटिक, अब ऑटोनोमिक है तो ऑटोनोमिक में हमें दोनों सप्लाई मिलेंगी, पैरासिम्पैथेटिक भी और सिंपैथेटिक भी। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई S4 से S2 से S4 से आती है और सिंपैथेटिक सप्लाई लोअर थोरेसिक और लंबर सेगमेंट से आती है। ये तो हो गई इसकी ऑटोनोमिक सप्लाई। अब हम देखेंगे वॉलेंट्री सोमैटिक मोटर एंड सेंसरी नर्व्स सप्लाई फॉर द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। मतलब कोलन, रेक्टम, इंटरनल एनल स्फिंक्टर को ऑटोनोमिक सप्लाई होती है, लेकिन एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को वॉलेंट्री सप्लाई होती है। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की सप्लाई भी S2 से S4 से आती है, पोडेंटल प्लेक्सस से। coursing through the spinal cord, these nerves have direct connections with integrating supraspinal centers in the pons and cerebral cortex. Colon peristalsis propels feces into the rectum. The gastrocolic reflex increases peristalsis for about 30 minutes after the food intake. Rectal fullness initiate an autonomic stretch reflex with the relaxation of the internal anal sphincter and create a sensation of pre-defecation urge. In contrast, the voluntarily controlled external sphincter remains contracted to retain feces. When the situation warrants, this action is further enhanced by voluntary contraction of the levator ani, gluteal and other thigh muscles. Defecation occurs when the external sphincter is voluntarily relaxed. अच्छा, हम देखेंगे bowel management. Fecal incontinence and constipation are common problems with spina bifida. The external anal sphincters can be weak and petulous. The reflex arc can be interrupted, causing an interruption of innervation to the anal sphincter. Bowel management is essential for a successful bladder program. Daily bowel movement should be a goal. Aspects of daily bowel care including drinking enough fluids and using an osmotic laxative such as polyethylene glycol, high fiber diet to bulk up the stool, and preferably digital rectal stimulation or a glycerine suppository in infants and younger children, and a biscotile suppository 5 mg rectally in younger children,
and 10 mg rectally in those at least older than 2 years, usually school age for the higher dose. Although the use of gastrocolic reflex is questionable in the spina bifida population, it is still advised to try having the bowel movements approximately 20 to 30 minutes after the nightly meal. The morning or the afternoon meal are both okay too, but secondary to schedules, it may be difficult to embark on a bowel program just before school or work or during school or work. Why do I go to bathroom right after I eat? The gastrocolic reflex is a reflex that stimulates contraction in the colon that can lead to the BM shortly after eating. ये हमारे पास gastrocolic reflex. Hi dear colon, it's your pal, the stomach. How you doing? Make some room. She just ate pizza and donuts. Got it. I will start contracting now so I can get rid of what's already here. She will be using the bathroom in no time. Bowel programs for incontinence, brain and spinal cord injuries. Bowel routines are the daily part of the life for everyone, though for those who have suffered a spinal cord injury, nerve damage or the brain injury can often result in bowel dysfunction and one's ability to control their bowel movements. Establishing our daily bowel programs can be invaluable. Insert a lubricated finger into the rectum and relax the sphincter muscle with a gentle circular motion. Once stimulated, the person should sit in a normal position, either on the toilet or, if confined to a bed, using a bedpan or disposable pad or diaper. If they are unable to sit up, have them continue to lie on their left side or continue to sit on their commode. If they still have not had a bowel movements after 20 minutes, repeat the stimulation. If the bowels are void of constipation, accidents of stool and urine are less likely. With severe constipation seen on an abdominal film or with palpable stool still in the abdomen, the previous procedure should be followed along with an enema. Anatomic bowel obstruction should be ruled out by abdominal X-ray in severe constipation before a colonic cleansing enema is performed. A surgical procedure may be necessary, such as catheterizable appendectomy, appendico, surgical procedure may be necessary, such as catheterizable appendicostomy through the abdominal wall to flush the large intestine from the proximal end with an enema. ये हमारे पास वही प्रोसीजर हो गया. Anorectal manometry and biofeedback in the presence of intact or partial rectal sensation. Anocutaneous reflux offer encouraging results. Rectal sensation is considered normal when a rectal balloon inflated with 10 ml of water or less is perceived. The external sphincter activity can be recorded with surface electrodes. Repeated session of inflating and deflating the balloon comprises the biofeedback training. This can be done during a urodynamic procedure. Dyssynergic defecation, balloon expulsion test. Balloon filled with 50 ml water. ये anal canal closed polyethylene catheter. 3-way stop cock to pressure the transducer. अच्छा ये हमें सिटिंग पोजीशन दिखाई हुई है राइट साइड पे. पेशेंट सिट्स ऑन द टॉयलेट. पेशेंट ट्राइज टू एक्सपेल बैलून. नॉर्मली क्या होता है लेस देन 60 सेकेंड्स तक वो कर सकता है. अच्छा इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज दिस dyssynergic defecation. Dyssynergic defecation is a condition that affects the pelvic floor muscles. These are the muscles located in the lower abdomen that allow bowel movements to pass normally. The pelvic floor muscles do this by supporting the organs such as rectum, uterus, and the bladder. Dyssynergic defecation occurs when the pelvic floor muscles are unable to coordinate with surrounding muscles and nerves to produce a normal bowel movements. This leads to constipation. About a quarter of chronic constipation is due to dyssynergic defecation. Causes: some patients develop dyssynergic defecation as children, some after an episode of pregnancy or injury, and others develop the condition without unknown cause. Specifically, the cause of dyssynergic defecation is not clear. The inability to coordinate muscles use is the caused by impaired rectal contraction or paradoxical contraction. This is when the anal muscles either do not relax enough
or tighten instead of relax during defecation. Many patients with dyssynergic defecation have decreased sensation in the rectum and trouble perceiving the arrival of a stool. अब हम देखेंगे कॉमन सिम्टम इन dyssynergic defecation. Common symptoms: excessive straining while passing a stool, the passage of hard stools, a feeling of incomplete evacuation or that stool is stuck, less than 3 bowel movements per week, using digital manual मतलब fingers to have a bowel movements. Thank you so much. नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.